Good morning, students. I hope you all are fine. And now we are going to start our biology chapter number 1, that is the fundamental unit of life. So, we are going to discuss the first chapter with your reference book, that is Science Biology, class 9. Moderns A, B, C plus Science. This is your reference book. I am going to explain this chapter with your reference book. So in this first chapter we will discuss the topic wise, and the first chapter introduction is here. The fundamental unit of life. We all know that what is the fundamental unit of life. Can you anyone answer? Yes, cell. The fundamental unit of life is cell. We all know that all organisms are made up of cell. There are 8.7 millions of living organisms. August 2011 report, which include monoras, bacteria, and whatever the matter is given here, we will leave that matter. We have to discuss from these organisms. It means organisms show great biodiversity. We all know that in the world the great biodiversity and of plant species and animal species, but great biodiversity not only in shape. जानवरों में स्टूडेंट सिर्फ शेप साइज का डाइवर्सिटी नहीं है एंड स्ट्रक्चर का, बट ऑल्सो इन देयर फंक्शनिंग, उनके बॉडी का फंक्शनिंग भी डिपेंड करता है. बट ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस इन अ similar manner and are formed of one or more compartments called the cell. So all the living organisms are cellular in nature. It is clear that is they are formed of microscopic units because they all are made up of cells. Cell are the microscopic units. It means we can see cells with the help of microscope only. Cell is said to be the smallest structural and functional unit of life. You can write the definition also. Cell is said to be the fundamental unit of life, and cell is the basic structural and functional unit of life. Now, history of cell or cell biology. Aristotle concluded that all the animals and plants, जितने भी animals और plants are formed of repeating elements. He is commonly called father of biology. Who is called father of biology? Aristotle. Now second, Robert Hooke in 1665. Who discovered cell? Robert Hooke discovered cell in 1665. An English botanist observed thin sections of bark of a ट्री अंडर सेल्फ डिजाइन कंपाउंड माइक्रोस्कोप. उन्होंने सबसे पहले एक पेड़ के बार्क के कॉर्क को जो खुद से डिजाइन किए हुए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर नोटिस किया, एंड दे नोटिस हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. मधुमक्खियों के छत्ते के जैसा एक कंपार्टमेंट दिखाई दिया उन्हें. ही कॉइंड देम एज सेल्स. दीज सेल term cell was derived from a Latin word cellula, which means a little room. He explained his observations in a book namely Micrographia. He actually observed the rigid cell walls of dead cells. You can see that compound microscope here. Hooke's compound microscope in section A, and section B is the picture of section of cork. Activities to prove cellular nature of organisms. Without any exception, all these organisms are cellular in nature. This can be proved by performing the following activity. So students, we have to look here the activity number 1. To prepare a temporary strained slide of an onion bulb peel. Requirement: what we require? Onion bulb, glass slide, glycerine, watch glass, cover slip, forceps, scalpels, needles, iodine solution और methyl blue microscope etc. Procedure क्या है? I am repeating one by one every procedure you should follow in the lab.
separate out a thin onion scale from onion, tear it from the concave slide as to get a transparent, thin and membranous onion peel piece called एपिडर्मिस। आप ये दो स्टेप्स करने के बाद स्टूडेंट इन थर्ड वन में नाउ कीप द ओनियन पील पीस इन वॉच ग्लास, आपको उस ओनियन पील को वॉच ग्लास में रखना है जिसमें वाटर कंटेन हो। कट आउट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस पील, उस पील का स्मॉल पोर्शन कट करना है एंड प्लेस इट फ्लैट ऑन अ ग्लास स्लाइड, ग्लास स्लाइड के ऊपर फ्लैट उसको स्प्रेड करना है ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश। ओके, समझ गए यहाँ तक। एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, अब उस ओनियन पील को फ्लैट ग्लास स्लाइड के ऊपर रख देना है और ड्रॉप ऑफ वाटर के ऊपर कैमल के हेयर पेंट ब्रश से आपको स्प्रेड कर देना है। और फिर आफ्टर दैट अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, मिथाइल ब्लू स्टेन भी डाल सकते हैं आप लोग। ड्रेन आउट द एक्सेस स्टेन एंड माउंट द ओनियन पील इन अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन अंडर अ कवर स्लिप, उसके बाद उस स्लाइड को कवर स्लिप से ढक देना है। एग्जामिन द स्लाइड अंडर द लो एंड हाई पावर्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको फिर स्लाइड को एग्जामिन करना है, यानी यू शुड observe this slides in high or low power of compound microscope. Here is the picture of an ordinary compound microscope, ocular eyepiece, body tube, and the full description is given. You can see the picture clearly. Here you should put the cover slip slide, and here is ocular eyepiece, you should observe from here. And in this microscope you have to observe like this and do this like in first onion peel लेना है एंड रिमूव करना है उसको, फिर उसके बाद इस तरह से कट करते हुए उसको स्लाइड के ऊपर रख के स्प्रेड करना है, फिर 1 ड्रॉप आयोडीन डालना है, फिर कवर स्लिप डाल करके उसको स्प्रेड करके वो कवर स्लिप को कवर कर देना है कवर स्लिप की हेल्प से। प्रोसीड्यूर टू प्रिपेयर अ टेम्पररी स्टैंड स्लाइड ऑफ पील ऑफ ओनियन बल्ब। नाउ ऑब्जर्वेशन, अगर आप फिर उसको इससे अगर देखते हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट द एपिडर्मल parenchymal cells of onion peel can be seen as regularly arranged linear or rectangular compartments with rigid cell wall. Nucleus is pushed towards the periphery due to presence of a central vacuole. Central vacuole के कारण न्यूक्लियस को थोड़ा पुश्ड किया रहेगा पेरिफेरी एरिया की तरफ। You can see the picture. The outer line is called cell wall, the inner area is called cytoplasm, and the circular dot, dark dot, which is colored by dark blue color, it is called nucleus, and nucleus is surrounded by central vacuole. Cells of onion peel under a light microscope. Precaution: immediately put the peel of onion bulb in water containing petri dish to avoid it folding and drying. Spread the peel uniformly on a slide. Excess of stain should be drained off. There should be no air bubble under the cover slip. Similarly, observations are found in the peel taken from the under surface of the leaf of Tradescantia or raw or temporary mounds of peels of onion of different size. Here is the activity 2. To prepare a temporary stand slide of squamous epithelial cells of cheek of man. Now students, we will end this topic, and in another video we will continue from activity 2 and the types of organisms. Okay students, that's all for today. Keep learning at home. Okay, bye.